In today's video, we are studying the radius. So I am holding the radius of the ox. Now this is the interior surface. How I am so sure that it's the interior surface because ulna जो होता है वो posteriorly fuse होती है. So this will be the interior surface. And this is the long bone. Radius ऊपर से form करती है elbow joint और नीचे form करती है carpal joint. It have two ends, the proximal end क्योंकि यहाँ पर ये ulna होगा और this is the distal end. And the shaft having four surfaces. The interior surface, the posterior surface fused with the ulna, and lateral surface is this जहाँ पर ulna दिखेगा, and the medial surface is free here. Now let's start. So the shaft of this radius, this is the interior surface. So interior surface is flat, it is concave and smooth. Interior surface having this tuberosity here. This is the radial tuberosity. Now the posterior surface, and now the interior surface give passage to the extensor muscle. यहाँ पर extensor muscle pass होती है, ठीक है. Now this radial tuberosity give the insertion of biceps brachii muscles. Biceps brachii muscle originate हुई थी कहाँ से? ट्यूबर स्कैपुले से और यहाँ पर आके इंसर्ट हो रही है, ठीक है. Now distally radius have three grooves as you can see here, 1, 2 and 3, and these three grooves for the attachment of carpal bones, and these three grooves also give passage to the extensor muscle. चार ग्रुप दिख रही मुझे तो. ये तीन ग्रूव्स हैं गाइस. ये वाली ये एक नहीं, वो तो वो है एक ग्रूव, दो ग्रूव और तीन, ये तीन ग्रूव्स हैं, ठीक है. नाउ द लेटरल सरफेस. लेटरल सरफेस कैसे पहचानेंगे? लेटरल सरफेस पे क्या अल्ना आगे जोड़ रही होगी, ठीक है. तो लेटरल सरफेस इज अगेन स्मूथ एंड राउंडेड एंड इट फ्यूजेस विद द लेटरल सरफेस ऑफ द अल्ना. तो रेडियस की लेटरल सरफेस और अल्ना की लेटरल सरफेस आपस में फ्यूज है एंड दे आर लिविंग हेयर अ ग्रूव, एंड दिस ग्रूव इज कॉल्ड द वेस्कुलर ग्रूव. और इस वेस्कुलर ग्रूव से कौन होता है यहाँ पर? दिस गिव अकोमोडेशन टू द इंटर ऑसियस आर्टरी. क्लियर? Now let's move to the medial surface. So oppositely to the lateral surface we have this medial surface. Medial surface is again smooth and it continues with the anterior and the posterior surface. As you can see यहाँ पर एक flat नहीं है, anterior और posterior से continue करती है. Now the medial surface at the middle of the above, middle से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर is a rough area, and this rough area give attachment to the brachialis muscle, and the brachialis muscle it is originated from the coracoid process of the scapula. So this was the coracoid process here. तो यहाँ से ये स्टार्ट होती है और यहाँ पर आके ब्रैकियालिस मसल स्ट्रेच होती है मीडियल सरफेस में, इस जगह पर. नाउ अगेन द रेस्ट सरफेस इट इज सेपरेटेड. here we can see a ridge, ठीक है. दिस ridge separating the posterior and the interior surface. Now we have completed the sides of the surfaces. Now we are moving on to the ends. So this is the proximal end या फिर proximal extremity. The proximal extremity contain two articular surface. These two articular surface give accommodation to the condyles of the humerus. ये condyles है humerus के, and they are like this, and they form the elbow joint. Next, the proximal surface. So this is the articular surface for the accommodation of the condyles of the humerus. Next we have the coracoid process. Coracoid process is the projection at the cranial ring, ठीक है. This is the coracoid process. Now we have tuberosities. There are two tuberosities. This one is the medial surface, so this will be the medial tuberosity, and this is the lateral surface, so this will be the lateral tuberosity. The lateral tuberosity, as we can see, it is well marked, and the medial tuberosity is not so well, अच्छे से नहीं दिखता है. Next we have this distal end. Distal extremity contain three grooves, and these three grooves for the carpal bones. Now this is the medial surface, so this is the medial groove. This is the lateral surface, this will be the lateral groove, and this is the middle groove. अब देखो lateral पे अल्ना है तो यहाँ पर अल्नर कार्पल आएगी, ये मीडियल पे रेडियल कार्पल आएगी और यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्पल आएगी, ठीक है. So this was all about the radius.